Uh, Good morning, respected principal sir and dear teachers. Thank you to each and everyone once off for being here with us today. You all know that we are conducting in-house training program on topic teaching strategy in science secondary level. I am glad to welcome Mr. Sheikh Abdul Rahman sir to share his valuable points on this topic. Thank you, sir. Hello. Thank you, Uday sir. And once again, I will thanks to Principal sir and Ajit sir for arranging this in-house training programs. And once again, I will say good morning to all of you, my colleagues and Principal sir and Ajit sir. And today we are going to conduct in-house training programs. The topic is teaching strategies of science. This topic we have been learning from the beginning also. Once again, I am going to share uh, my views on these topics. Whatever ideas and knowledge I have in these topics, I will share once again, one by one. So first, we'll start the what is teaching strategies and methods of teaching science, and why it is very important for us, and so first of all, I will discuss about the needs of the following these teaching strategies and different methods for teaching the subject science. Whenever we are entering inside the classrooms, we are facing a lot of problems regarding sitting arrangements, regarding lesson plans, regarding the classroom management disciplines. So we have to teach in such a way that we have to follow the methods or strategies in such a way that so that all the students inside the classrooms will get attracted towards us, and they will able to listen whatever we are going to teach them. This is the very important method. So first, whenever we are entering inside the classrooms, we have to make the students their attention towards us. If they will concentrate on our teaching, then they can understand whatever we are going, which topics we are going to teach them, and our teaching learning process will be most effective. So here are some important strategies or methods. First, whenever we are entering inside a classrooms to teach any particular topics, we have to not start the chapter initially. We have to make first the relationship between the previous chapter and current chapter. We have to ask some questions to the students,
so that they will get attracted towards us and ask questions to all the students, not to the particular students who are giving always answers, and also engaging them inside the classrooms. First, we have to ask some questions, then we have to engage. We have to take the observations, and we have to take some methods to engage the students, and so that they will get the attention towards us. Then here are some methods we'll discuss today. How to conduct. This is the biggest challenge before us, to teach the science lessons. In this teaching learning activities, students can attract towards us whenever we are obeying, whenever we are taking the different effective methods or strategies inside these classrooms, and so that whenever we are going to teach a science topic, any topics, the biggest challenge before a teacher or before us to teach the students in such a way that so our teaching learning process will be effective. In this teaching learning activities, so one by one methods or strategies we'll discuss now. How to make the students effective, and how to make the teaching learning systems more effective inside the classrooms. For this, we will discuss the different steps. Here are some steps we will discuss. Science is not simply concepts of facts. It is a discipline of thinking about rational solutions to problems. After establishing the basic facts derived from the observations, whatever lessons we are teaching to the students, we have to demonstrate some activities. We have to demonstrate some practical. We have to give some practical knowledge to the students on some basic facts. We have to derive. We have to explain in front of the students, so that they will get attracted towards us, and whatever topic about the topics we are teaching them, that will be more effective. It is hypothesized from what is known to what might be, and then attempting to test the hypothesis. Logical thinking must come first, and some characteristics also there of learners which are relevant to science teaching. First characteristics: learners learns and develop as a whole persons, and learners grow through the same predictable stages, but at different rates. जब हम क्लास के अंदर जाते हैं तो सारे स्टूडेंट्स जो हैं एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ उसमें लो अचीवर्स भी होते हैं, कुछ गुड अचीवर्स होते हैं, कुछ उसमें जो है ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी होते हैं. तो whenever we are teaching any topics inside the classrooms, we have to keep in our minds that we should not ask always, we should not give importance always to the good students. We have to ask questions from all students which are having the low achievers, which are not learning properly. We have to make them attract. We have to make them concentrate towards our teaching. So the learners cognitive, affective, physical, social, and emotional areas are intricately intertwined. Learners cannot grow in one areas without affecting the other areas, and this means that children of the same age group may not exhibit uniform characteristics. Some may be more intellectual, or some may be socially advanced, some having the good knowledge than the other. So different types of
students we have to get inside the classrooms, and accordingly we have to teach in such a way that we have to follow the methods so that all students will get the same knowledge. The learners learns best through the involvement with concrete experiences. If we are taking the different hand-on activities, can result in significant improvements in academic performance and attitude of students towards the science. Learners are curious and eager to learn when the teacher feeds the learning environment to learners. जब एक टीचर जो है क्लासरूम्स के अंदर एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है, गुड एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है, जब वो क्लासरूम को प्रॉपरली मैनेज कर पाता है, तो जितने भी स्टूडेंट्स क्लासरूम के अंदर रहते हैं, चाहे वो वीक स्टूडेंट्स हो, लॉस चिकर्स हो, या कुछ दूसरे टाइप्स के भी स्टूडेंट्स हो जो कंसंट्रेट नहीं करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे, तो टीचर जब क्लासरूम्स को एक एनवायरनमेंट, गुड एनवायरनमेंट में कन्वर्ट कर सकता है, तो all the students will get attracted towards the teachers. So for this purpose, we have to make the students interest, needs, and their levels of maturity. They become highly motivated whenever we are making a good environment inside the classrooms. So here are some examples given by which we can demonstrate, we can give some activities, some demonstrations to interact the students inside the classrooms in a particular topics. Suppose we are going to teach a chapters force and pressure inside a classrooms. So a simple activity we can take that we have taken some water inside a beaker, and we have made here 3 holes, that is hole A, hole B, and hole C. Whenever we are making this 3 holes A, B, and C according to the different depth above the below the water, so the water will stay and fall down on the surface of the ground at different length from the beaker. So we can ask why it is happening after completing the lessons topics force and pressure. This is coming under the pressure chapter. Whenever we taught about these pressures exerted by the liquids in a particular container. So what are the difference between these 3 points A, B, and C? Whenever water is spraying from these 3 holes A, B, and C, that is reaching at the different length from the containers. So easily, whenever the students not understanding, which students are not understanding, which students are not clear by these activities, by demonstrating these activities or showing these activities, involving all the students in these activities, we can clarify, we can attract to the students toward the study. So here are some activities I have taken here. In these activities, we can say that whenever the depth of water is increasing in a beaker, suppose if we will take this point A and B and C. Here in this point A, the depth of water above the point A is less, and in this point B, the depth of water is a little bit more than A, and at this point C, the depth of water is much more than these 2 points A and B. So whenever depth is increasing, the pressure on the water also increases. That is why the pressure is directly proportional to the depth of the water. So whenever depth is increasing, the pressure at that particular point also increasing, so that the pressure increases, so that the distance of this point of falling water is more. Similarly, other activities also we can take from the physics portion. Also we can take some activities, and whenever we are going to teach the chapter light chapter, that is we have reflection.
So in this reflection chapters, we have been teaching the students from class 6, 7, 8, even also in 10th class also we have reflection of lights. So one simple activity we can explain, we can say that the laws of reflection, is how this is incident ray, reflected ray, angle of incidence, angle of reflections, plane, how the plane mirror reflectors ray of lights, and we can take one plane mirror, so we can take one source of light, we can take some one ball as a source of light, and we will draw the ray diagrams, incident ray, reflected ray, and angle of incidence, angle of reflections, and what is laws of reflections, and first law, second law. We can ask the questions inside the classrooms, and we have to attract the students towards us so that our teaching will be effective. So like this, other methods also there, teaching will be more effective if we will do the other some strategies like present science as a way of finding out rather than as a body of facts to be memorized, allowing learners to discover and organize the information, equip the with problem solving and decision making skills. It also results in the knowledge that is more easily remembered and called than rote learnings. Emphasizing learning by doing. This is also one best methods of teaching science. A number of researchers shows that learners learns better when they are personally involving in a physical or hands-on activities. कोई भी स्टूडेंट्स को हम डेमोस्ट्रेट करते हैं, थियोरेटिकली बताते हैं, पढ़ाते हैं क्लासरूम के अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक्स में, तो वो उतना अच्छा से समझ नहीं पाता है जब हम उसको हैंड्स ऑन एक्टिविटीज कराते हैं, उसको जो है कुछ प्रैक्टिकल कराते हैं या उसको जो है हम प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट कराते हैं, तो उसमें वो जितना इन्वॉल्वमेंट उसका होता है टॉपिक्स के अंदर, उतना जब हम लेक्चर मेथड से सिर्फ बोलते जाते हैं, जो भी टॉपिक्स के बारे में पढ़ाते हैं बोलते जाते हैं और पढ़ने के लिए बुक्स में बोलते हैं, तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है. तो ये नंबर्स ऑफ रिसर्चेस shows that this is learners learns better when they are personally involved in a physical hands-on activities. And then encourage interactions among the learners, giving opportunities for students to work together in a groups. Students who work together learns more from each other. They also develop their social and communication skills in the प्रोसेस. जब हम कुछ भी एक्टिविटीज कराते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं क्लास के अंदर, और पर्टिकुलर ग्रुप्स को जब हम डिफरेंट एक्टिविटीज देते हैं, प्रोजेक्ट्स देते हैं, तो स्टूडेंट्स के अंदर में एक कम्युनिकेशन स्किल्स जो है डेवलप होता है, उनके अंदर एक लर्निंग करने का जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होता है, एंड दे आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड द स्टडी. Adapting science experience to the learners' developmental levels. For example, learners differ on how they operate mentally. Therefore, we must arrange experiences that fit what they can do. हम एक क्लासरूम्स के अंदर में जब जाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं. सबके मेंटालिटी जो है एक जैसा नहीं होता है. जैसे हम बताएं कि कोई वीक स्टूडेंट्स भी होते हैं, सपोज कोई लो अचीवर्स होते हैं, गुड अचीवर्स होते हैं. जो लो अचीवर्स होते हैं तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू गिव द एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू देयर मेंटालिटी, एंड if some good achievers are there, some brilliant students are there, accordingly we have to give the activities so that they will get interest on that particular activities, and they will experience that fit with them. Then using a varieties of approaches in teaching science. Students have different learning styles. To be more effective, we must be aware of their learning styles, and we must consider them in choosing which teaching method to use for a particular group of students. So according to their achievements, according to their knowledge, we have to divide the students according to the different groups, and after dividing in groups, we have to give the activities so that that particular activity will be fit to that particular groups of students. And then construct
twist strategies. There are several strategies that can be used to reconstruct and assess the learner's understanding of science concepts, principles, laws, and theories. In science subjects, we have many parts that concepts, principles, laws, theories, activities. The following discussions will focus on some of the strategies like the discovery of approach. That means we can increase the motivations of the learners to learn science if they are to experience something different from their day to activities. तो सबसे पहले हम जब साइंस के टॉपिक पढ़ाते हैं, जब हम एक साइंस के टीचर है, साइंस सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, तो बच्चों को साइंस का जो बेनिफिट्स है, whatever benefits they are going to get in future from this science subject, we have to explain to them so that they will get attracted to this particular subject science. We can increase the motivation, we have to motivate them. जैसे कि हम बताएंगे कि जो है साइंस सब्जेक्ट जब हम 10th क्लास पास करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे फील्ड्स आते हैं, हम आर्ट्स लेके पढ़ सकते हैं, कॉमर्स लेके पढ़ सकते हैं, मगर जब हम साइंस लेके पढ़ते हैं तो हमारे पास जो है बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हमारे सामने आते हैं. हम इंजीनियर बन सकते हैं, हम डॉक्टर बन सकते हैं, हम वेटनरी डॉक्टर बन सकते हैं, हम एग्रीकल्चरल इंजीनियर बन सकते हैं, इंजीनियर हम आईटी सेक्टर में भी जा सकते हैं. हम इंजीनियर्स बनेंगे तो हमारे सामने फिर इंजीनियर्स के बहुत सारे ब्रांचेस आते हैं. केमिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हैं, और जो है हमारे जो है और भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं. वी कैन टेक इफ वी आर टेकिंग द सब्जेक्ट एज ए साइंस इन द 11 और 12 लेवल्स. तो हमको पहले जो है साइंस के बारे में उनको इंटरेस्ट दिलाना है. साइंस का जो बेनिफिट्स है, साइंस का जो एडवांटेजेस है, whatever profit they are going to get in future if they are taking the subject as a science, we have to explain in front of them. Then the lessons proceed through the different stages which may be associated with the levels of thoughts. The stages are inactive levels. It is divided into many parts, that is inactive level, then symbolic level, and another one is our iconic level. So through this different levels we have to describe, we have to go through these levels during the teaching process, teaching learning process. There are several strategies that can be used construct and assess the learners understanding of science concepts, principles, laws and theories, and the discovery approach, that is so these are the stages we have to follow. That first stage is inactive level. At this stage the students perform hands-on activities directly. We have to give some activities, they will conduct that they will go through that activities, and then after we will ask, or we will give some task to ask some questions. So simply here one I have given, for example, the simple activity in box 1 we have taken here. We have given, suppose here in this box 1 we have given, here we have taken one conical flask, empty conical flask which is contains only air, and we have tied one balloon, empty balloons with the rubber on the mouth of the conical flask, and we are hitting this conical flask. They are hitting this conical flask. They get an empty bottles or flask attached with the balloons to the bottles, and is it with a rubber tied with a rubber band. Apply heat as shown in the figure. So after applying heat, some changes we have to see on that balloon. So what changes we are seeing in this balloons to observe, that is called the iconic levels. After the students have done the
hands-on activities and gain some experience. whenever वो जब इस एक्टिविटी को करते हैं, कॉनिकल फ्लास्क ले लिए, उसमें जो है उसके माउथ में जो है एक बैलून को टाइट कर दिया, बांध दिए, और बांधने के बाद उसमें जब हीट अप्लाई किए तो उसमें कुछ चेंजेस उनको देखने को मिला। तो हम उस कौन से चेंजेस वो देखने को उनको मिला, हम उसको क्वेश्चंस के फॉर्म में, हम वो कौन सा एक्सपीरियंस गेन किए, उनको क्या ऑब्जर्वेशन मिला, हम उसको क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछेंगे। Activities and gain some experiences that teacher directs the thinking of the students using experimental situations to the mental images or models of the objects used upon which the discovery is to be based. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये बॉक्स टू में एक क्वेश्चन तैयार करेंगे। तो क्वेश्चन तैयार करके इस बॉक्स में हम 3 डायग्राम बनाए हैं। यहाँ पे 3 डायग्राम है। तो सेम कॉनिकल फ्लास्क लिए हैं, 3 बैलून तीनों फ्लास्क के माउथ में टाइट किए हैं। तो एक को 30 डिग्री सेल्सियस से हम हीट कर रहे हैं, और एक मिडिल वाले को हम जो है 40 डिग्री सेल्सियस से हीट कर रहे हैं, और लास्ट वाले को 50 डिग्री सेल्सियस हीट से हम हीट कर रहे हैं। तो वी हैव टू आस्क क्वेश्चंस, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड टू द बैलून्स व्हेन द बॉटल वाज हीटेड। तो पहले हमको पूछना है कि जब आपने बॉटल को हीट किया तो बैलून में कौन सा चेंजिंग आपको देखने को मिला, क्या ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिला। सेकेंड क्वेश्चन वी हैव टू आस्क व्हाई डिड दिस हैपेंस, ये क्यों हुआ ऐसा। जब हम हीट किए, सपोज वो आंसर दे रहे हैं कि जब हम हीट किए तो बैलून इन्फ्लेट हो गया, बैलून फूलने लगा धीरे धीरे, तो ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण क्या है। व्हाट यू रियलाइज, व्हाट यू ऑब्जर्व, व्हाट यू एक्सपीरियंस्ड, वी हैव टू आस्क इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। थर्ड में हम पूछेंगे, गिवन द इलस्ट्रेशंस बिलो, हाउ विल यू एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द साइज ऑफ द बैलून्स। यहाँ पे 3 डायग्राम जो हम दिए हैं बॉक्स 2 में, हम उनसे पूछेंगे कि तीनों डायग्राम में आप क्या डिफरेंस आपको मिला। 30 डिग्री सेल्सियस जब हीट करते हैं तो उसमें क्या चेंजिंग होगा, जब 40 डिग्री सेल्सियस से हीट करते हैं तो और कौन सा चेंजिंग होगा। तो तीनों चेंजिंग में डिफरेंस क्या है, ऐसे हम उनसे क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। देन लास्ट वन इज सिंबॉलिक level. At this point, the students are guided to replace mental images, whatever they experience, whatever the knowledge they gain by that activity. That mental images with we have to replace by the symbols to increase generality and abstractions, which eventually results in the discovery planned by the teachers in the advance that is given in the box 3. तो यहाँ पे एक तो हम पहले एक्टिविटी ऑन हैंड एक्टिविटी को करने के लिए दिए, उसके बाद सेकंड बॉक्स में हम उनसे क्वेश्चन पूछे। थर्ड में क्या करेंगे, हम सिंबॉलिकली उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सिंबॉलिकली हम मैथमेटिकल रिलेशनशिप से उसको कैसे हम राइट करेंगे। जैसे साइंस में हम बहुत सारे जो है सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो यहाँ भी हम कैसे सिंबॉलिकली उसको रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम बताएंगे। इन द एक्सपेरिमेंट्स अबाउट द बैलून्स there are 2 important variables involved, that is one is volume and another one is temperature. तो यहाँ पे जब हम कॉनिकल फ्लास्क को हीट करते हैं तो यहाँ पे 2 वेरिएबल So after this asking these questions, we have to symbolically how to represent. First, we have to find out the variables. Which variables are there here in this experiment? We found that 2 variables are there. One is volume, another one is heat. जब हम हीट करते हैं तो वॉल्यूम चेंज होता है। तो हम उनसे पूछना है कि जब हीट करते हैं तो वॉल्यूम जो है बढ़ता है या घटता है। तो ये जो हम पहले बॉक्स 2 में 3 डायग्राम दिए थे, 30 डिग्री, 40 डिग्री एंड 50 डिग्री वाला, तो उससे वो क्लियर हो जाएंगे कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब टेम्परेचर एट 30 डिग्री वी आर अप्लाइंग ऑन दैट कॉनिकल फ्लास्क, whatever expansion is taking place inside the balloon, that means the air present inside the bottle, little bit more expansion in volume taking place in case of 40 degree Celsius. और जब हम 50 डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो उसमें और भी ज्यादा वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसको मैथमेटिकली हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। वॉल्यूम के लिए हम V ले सकते हैं
और टेम्परेचर के लिए हम T ले सकते हैं और V/T इक्वल टू कांस्टेंट हम ले सकते हैं. So I'll request to all the participants, if disconnected by chance due to the any technical effect problems, please click to join once again inside this meetings. So immediately after disconnections, you please rejoin by clicking on the same links. तो इन दिस फॉर्म में जो हम मैथमेटिकल रिलेशनशिप बनाते हैं दैट इज कॉल्ड द सिंबॉलिक लेवल. इसको सिंबॉलिक लेवल कहते हैं. एट दिस पॉइंट द स्टूडेंट्स आर गाइडेड टू रिप्लेस मेंटल इमेजेस. जो भी वो ऑब्जर्वेशन, जो भी वो आइडियाज, जो भी वो जो है एक्टिविटी बना करने के बाद जो भी उनको जो है ऑब्जर्वेशन मिला, दैट दे हैव टू प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स. देन विल डिस्कस. तो इसी तरह हम बहुत सारे जो है एग्जाम्पल्स ले सकते हैं. उनके सामने बहुत सारे जो एक्टिविटीज के थ्रू से हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम उनको बता सकते हैं. जैसे जब हम फिजिक्स के पार्ट में जाएंगे तो और भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं. जैसे हम क्लास 6, 7, 8 या 9, 10 में भी पढ़ाते हैं कि द इलेक्ट्रिकल करंट एंड इट्स इफेक्ट. तो ये चैप्टर ऐसा है कि जो 6 से स्टार्ट होता है, 10th, 11th, 12 जितने हायर क्लासेस में जाएंगे ये चैप्टर लाइक चैप्टर प्रेजेंट रहता है. तो हम उनको इंटरेक्ट करने के लिए, क्लासरूम में इंटरेक्ट करने के लिए, क्लास को मोर इफेक्टिव बनाने के लिए जब हम एक इलेक्ट्रिकल करंट एंड इट्स इफेक्ट पढ़ाना चाहते हैं तो उसमें हम सिंपल एक एक्टिविटी दे दें उनको जो कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे 2 आयरन नेल लिया गया है, एक थर्मोकोल लिया गया है, एक निक्रम वायर है और जो कुछ रेजिस्टेंस है, एक स्विच है और एक सेल या बैटरी लिया गया है. तो हमको यहाँ पे उनको बताना है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. करंट के बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड दैट इज केमिकल इफेक्ट्स. डिफरेंट क्लासेस में, डिफरेंट स्टेजेस में हम डिफरेंट इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं. तो यहाँ पे हम ये एक्टिविटी के थ्रू से उनको जो है एक एक्टिविटी करने के बाद हम उनको बहुत सारे क्वेश्चन उनके सामने ला सकते हैं और उसको सिंबॉलिकल फॉर्म में भी हम जो है फॉर्म कर सकते हैं. तो यहाँ पे जब हम करंट पास करेंगे तो ये निक्रम ऑयल जो बीच में कनेक्टेड हुआ है बिटवीन 2 nails that will get heated whenever we are passing electric current through this circuit, and this heat is produced because nichrome oil resisting more current easily not allowing to pass electric current. जिसका जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जो जितना करंट के फ्लो को प्रिवेंट करेगा, रोकेगा, रेजिस्ट करेगा, तो वहाँ पे हीट उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा. इसीलिए हम यहाँ पे इस एक्टिविटी में निक्रम वायर कनेक्ट किए हैं. तो वी हैव टू स्पीक टू द स्टूडेंट दैट यू जस्ट मेक दिस अरेंजमेंट, यू कैन अरेंज, एंड आफ्टर दैट